Well, on a breaking update, it's even getting worse now as the temperatures have now sharply dipped. We are looking at Delhi AQI has gone up further. Now, from very poor category, several hotspots that we are looking at is already recording AQI of over 400, leading to almost severe in multiple locations there. But there you can see it's dense haze, smog, pollution that has enveloped the Delhi NCR, and the AQI continues to remain in the very poor category. In fact, the temperatures have dipped further this morning, recording the minimum to at least 11 or 12 degrees Celsius there. But we are looking at Delhi's air quality registering a continuous dip. Even in the morning temperatures that we are looking at over 300 that it is currently recording. According to the Central Pollution Control Board, while the overall AQI continues to remain in the very poor category, several monitoring stations as well have been reporting readings in the very poor range. And several of those locations, there you can see pictures coming in from the Akshardham temple, barely visible at a distance there. भावना हमारे साथ जुड़ गई हैं. भावना, आप कहां से हमारे साथ जुड़ रही है, एक बार जरा बताएं. और हालात फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे. अभी हमने पिछले रविवार को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट जरूर देखा था दिल्ली एयर क्वालिटी में, लेकिन उसके अगले दिन ही वापस वेरी पुअर कैटेगरी में जो हवाएं थी वो वापस उसी रिकॉर्ड में आनी शुरू हो गई हैं. बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात करें दिवाली के बाद से ही दिल्ली की जो हवा है वो प्रदूषित है. कुछ दिनों में अगर हम देखें तो अप और डाउन हुआ है AQI लेवल में, लेकिन आज भी जो AQI लेवल है वो गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली के जो तमाम स्टेशन हो, चाहे रोहिणी हो, जहांगीरपुरी हो, ऐसे कई इलाके हैं, आनंद विहार हो, जहां पर AQI खराब बना हुआ है. इस वक्त हमारी मौजूदगी कर्तव्य पथ पर है. आप कर्तव्य पथ से नजारा देखिए कि आपको यहां से राष्ट्रपति भवन धुंधला नजर आ रहा होगा. स्मॉग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है. अमूमन जो लोग कर्तव्य पथ पर सुबह जॉगिंग के लिए आते हैं, रनिंग के लिए आते हैं, उनमें बहुत कमी आ चुकी है. और जो लोग घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं, अक्सर कर्तव्य पथ से वो राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट को साफ देख सकते हैं. लेकिन अब स्थिति देखिए कि घना कोहरा जो है वो आपको देखने को मिल रहा होगा. ये स्मॉग है जो पिछले कुछ दिनों से दिल्ली पर छाया हुआ है. बड़ी बड़ी इमारतें हो, इस तरह के मॉन्यूमेंट्स, हर जगह आपको इसी तरह की तस्वीर नजर आएगी. आप इंडिया गेट की तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से घना कोहरा जो है वो देखने को मिल रहा है. और ऐसे में अगर बात करें तो आज जो दिल्ली का ओवरऑल AQI है वो 299 है, और जैसे ये 300 क्रॉस करेगा ये वेरी पुअर कैटेगरी में पहुंच जाएगा. दिल्ली के ऐसे बहुत से इलाके, अगर बात करें, बहुत से स्टेशन हैं जहां पर AQI जो है वो 300 से ज्यादा है, जैसे ओखला, पटपड़गंज, पंजाबी बाग, पूसा या RK पुरम. अगर बात करें तो कल दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बहुत अहम बैठक की है बढ़ते हुए प्रदूषण को लेकर, और कहा है कि जो एजेंसियां लापरवाही करेंगी उन पर चालान भी लगेगा, FIR भी दर्ज होगा. और पॉल्यूशन से जुड़े हुए सभी जो प्रिकॉशंस है वो दिल्ली में लिए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बहुत अलग है. लगातार पॉल्यूशन का यही कहकर कि इस दफा हवा उतनी खराब नहीं है पिछले सालों के अगर कंपैरिजन में, क्या इसे यही कहकर प्रदूषण कम हो जाता है? नहीं. एज फार एज वी आर फोर्स्ड टू ब्रीथ दिस टॉक्सिक एयर. भावना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए. गेटिंग दिस लाइव अपडेट एट अबाउट 8:52 दिस मॉर्निंग. Currently when we speak of the AQI, it has already crossed 300. That means it is in the very poor category. Let's talk about the politics around this, because Manikam Tagore of the Congress party now says that Delhi's air quality is toxic, but the current government even refuses to acknowledge the crisis. Let's, in the meantime, we have Akansha with us who will help us understand, because yes, this is a crisis and this is a concern growing, Akansha. 11 years and zero action has been now the charge that is now being leveled by the opposition. Absolutely, and two Congress MPs, Amita, they have given adjournment notices seeking discussion in the parliament today as far as worsening air pollution in the national capital is concerned. One of them is Manikam Tagore of the Congress party. He has posted on social media as well, Delhi's air is toxic, but Modi refuses to even acknowledge the crisis. 11 years, zero action, only blame game. Enough is enough. We must raise our voice outside the parliament so this government finally accepts the problem and acts. Delhi deserves clean air, not excuses. So it appears that this is the topic that the Congress party, the Indie bloc, is going to take up in the parliament today. Two adjournment notices have been given by Congress MPs. They are seeking discussion on that. But remember, there was a symbolic protest inside the parliament as well. Yesterday, there were a few MPs who had come with the oxygen cylinders. So it remains to be seen what really happens in the parliament today as far as worsening air pollution. Also breaking out and calling out as far as when it comes to how breathing has now become a privilege. But even at a time when we are looking
looking at the nearly another further dip in the temperatures. The AQI levels, however, continues to rise. Akansha, thank you very much for joining us here on the broadcast. With that, we head into a short break. The morning news continues.